Hi guys, Rahul here. Please ping me if I'm audible and my screen is visible. Okay guys, so just before we start, we HBase in the previous class. So we are going to continue with HBase and see how it is related to HDFS and Hive. Yeah, Gulzar, so tell me what is your doubt? So Gulzar, देखो, you always run a MapReduce job, simple. Whenever you are working with Hadoop, you are running a MapReduce job. Okay, अभी स्पार्क की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है? स्पार्क आने के बाद MapReduce खत्म है, लेकिन अभी तक हमने जो भी सीखा है, हाइव, पिग, वो सब MapReduce ही चलाता है, ठीक है? तो जब भी हम कहते हैं कि HDFS में जो डेटा पड़ा है, उसे अगर फास्टर प्रोसेसिंग करनी है तो MapReduce ही करना पड़ता है। अब बस बात ये होती है कि MapReduce जो प्रोसेस है उसके दो पार्ट होते हैं, मैपर और रिड्यूसर। तो मैपर एक मैंडेटरी फेज है, रिड्यूसर एक ऑप्शनल फेज है। रिड्यूसर तभी होता है जब आपकी क्वेरीज में कोई रिड्यूसिंग लॉजिक हो, जैसे कि एग्रीगेशन, जब आप एग्रीगेट फंक्शंस चलाते हो, मिन, मैक्स, क्योंकि उसमें होता क्या है, देखो रिड्यूस को इस तरह से समझो कि अगर मैंने 10 रिकॉर्ड भेजे इनपुट में तो 10 ही अगर बाहर आए तो एक तरह से वो मैपिंग है, लेकिन 10 रिकॉर्ड इनपुट में भेजे और एक ही बाहर आया तो वो क्या, रिड्यूस। आपने बोला कि भैया ये 10 लोगों की सैलरी मैं भेज रहा हूं, इसमें से मैक्सिमम सैलरी मुझे बताओ, तो 10 इनपुट रिकॉर्ड दिए लेकिन आउटपुट में एक ही रिकॉर्ड आया, राइट? तो योर डेटा इज रिड्यूस्ड। तो if you have such kind of logics where the input and the output records are different, rather the output is lesser than the input, then reducers will run. Okay, बट ये बड़ा ही एक लेमैन आंसर दिया है मैंने आपको, इसका बहुत डिटेल्ड आंसर है, बट यू आर गेटिंग इट, गुलजार? So if 129 come as output, then is it MapReduce? So if 129, okay, so you mean to say you sent in 1 as an input and 9 records comes as output. Is it a MapReduce? You are saying that? Gulzar, you can speak up actually. I'm not getting it. सर अभी आप ही ने कहा था ना कि अगर 10 हमने इनपुट्स में डाले, उसमें से ये एक, उनमें से एक बाहर आया, उनमें से थोड़े से बाहर आए, आउटपुट का आया उनमें से। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैंने आपको 10 लोगों का डेटा दिया और बोला इनकी सैलरी 10% से बढ़ा दो सबकी, तो वो सिर्फ मैपर से हो जाएगा। 10 रिकॉर्ड इनपुट गए, 10 ही आउटपुट आए, क्योंकि सबकी सैलरी 10% से बढ़ानी है। गेटिंग इट?
तो वो काम सिर्फ मैपर फेस से हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन 10 लोगों की सैलरी में से मुझे बताओ कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी मैक्सिमम सैलरी है, तो वो काम मैपर से नहीं होगा। उसमें आपको मैपर और रिड्यूसर दोनों चाहिए। पहले मैपर चलेगा, उसके बाद रिड्यूसर चलेगा। तो रिड्यूसर आपका एक्चुअल काम करेगा वहां पे, जो एग्रीगेट फंक्शन चलाएगा। तो अंडरस्टैंड एट अ रूल ऑफ थंब कि व्हेन द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज सेम, इट्स मैपर, बट व्हेन योर आउटपुट रिकॉर्ड्स आर रिड्यूसिंग, it is having a reducing phase also. Okay, Gulzar, any doubt on that? Means ask me, means what's the doubt on that? एक्चुअली मैंने यही पूछा था कि 10 का डाटा हमने इनपुट में डाला ना, तो उसमें से अगर थोड़े ही तो उससे कम आउटपुट है, उसी को मैंने लिखा था 1 to 9 का मैं आउटपुट। हाँ, मतलब इफ योर डेटा इज रिड्यूसिंग, मतलब चाहे 1 हो, चाहे मतलब आउटपुट में चाहे 1 रिकॉर्ड आए, 2 आए, 4 आए, वट, मतलब दैट इज अ रिड्यूसिंग लॉजिक। ओके, तो रिमेंबर दैट वेन एवर यू हैव 1-to-1 मैपिंग, लाइक जो रिकॉर्ड इनपुट गया वही आउटपुट आ रहा है, बट कुछ प्रोसेसिंग के बाद, तो वो मैपर से हो जाएगा। जैसे हर किसी की सैलरी 10% से बढ़ा दी, लेकिन जब मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी है, तो मैंने 100 इनपुट रिकॉर्ड भेजे लेकिन मुझे 10 आउटपुट आए, तो मतलब वो 10 लोग जिनकी अपने अपने डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी है, तो वो मेरा क्या हो गया, एक रिड्यूसर लॉजिक हो गया वहां पे। ओके, किसी किसी और का कोई डाउट है? Okay, we will take those doubts later if any. So guys, now what we are going to start is HBase. But before we start HBase, we should understand why we need HBase, right? देखो, अभी तक we discussed that Scoop, Flume, Kafka कुछ भी यूज करेंगे या ETL टूल यूज करेंगे और डेटा HDFS में स्टोर हो जाएगा। अब जब डेटा स्टोर हो गया HDFS में, उस पे एनालिटिक्स करना है। एनालिटिक्स या मेरे पास हाइव में एसक्यूएल है, या मेरे पास तीसरी चीज क्या है, कोई बताएगा? एनालिटिक्स के लिए हडूप क्या क्या देता है? जावा फॉर मैप रिड्यूस, हाइव फॉर एसक्यूएल, एंड द थर्ड वन इज गाइस, थर्ड वन इज नहीं, क्लाउडेरा तो कंपनी है। यस, तान्या एंड करण, इट वाज पिग। तो देखो, हडूप में एनालिटिक्स के लिए हमारे पास जावा, एसक्यूएल एंड पिग, ये 3 चीजें हैं। गुलजार, क्लाउडेरा तो कंपनी है, ठीक है, जो आपको हडूप प्रोवाइड कर रही है, बेच रही है हडूप, ठीक है। तो और विपुल, आपके नो सीक्वल पे अभी मैं आता हूं। तो हमने अभी तक ये 3 चीजें सीखी। मतलब जावा मैप रिड्यूस हमें पता है काम कैसे करता है, उसमें एक मैपर क्लास है, एक रिड्यूसर क्लास है, एक ड्राइवर क्लास है। डिटेल्ड डिस्कशन एक अलग बात है। फिर हमने हाइव एसक्यूएल किया, जिसके साथ हमने इम्पाला भी किया, तो वो एक ही चीज है, हाइव हो गया, इम्पाला हो गया। फिर हमने पिग में देखा कि भाई डेटा कैसे रीड करते हैं, डेटा कैसे स्टोर या डंप करते हैं, उसमें इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है। वेरी गुड। बट जब हडूप इवॉल्व हो रहा था, मैच्योर हो रहा था, तो नए नए यूज केसेस सामने आए कि यार सिर्फ एनालिटिक्स से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी करना है। अब वो कुछ और क्या है? मतलब आप सिर्फ एनालिटिक्स नहीं करना चाहते, आप चाहते हो एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें बिग डेटा जो स्टोर हो रहा है उसको अपडेट भी किया जा सके और उसको फास्टर रिट्रीव भी किया जा सके। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हाइव का पर्पस ये नहीं है कि आप एक एक रिकॉर्ड रीड करो। हाइव इज फॉर एनालिटिक्स, टू रन एग्रीगेट क्वेरीज। अगर आपके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं एक टेबल में, तो आप ये नहीं कहोगे कि इसमें से राहुल का रिकॉर्ड मुझे दे दो। हाइव उस काम के लिए नहीं है कि यार राहुल की सैलरी बताना जरा, करण की सैलरी बताना, या राहुल कितने साल से इस कंपनी में है,
दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ हाइव। हाइव का पर्पस है कि भाई इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबकी टोटल सैलरी कितनी है, इस तरह का एनालिटिक्स करना। यू गाइज आर गुड इन एनालिटिक्स, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट। तो द पर्पस ऑफ हाइव इज नॉट OLTP, इट इज OLAP, राइट? आई टोल्ड यू टू रीड इट। तो OLTP के लिए हमारे पास SQL डेटाबेसेस जैसे ओरेकल वगैरह होते थे, और OLAP के लिए हमारे पास हाइव है, इम्पाला है, पिग है, राइट? तो अब क्वेश्चन ये आया कि क्या हडूप में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि वो भी OLTP की तरह यूज किया जा सके? People did a lot of brainstorming and then they come up with NoSQL, and that's why its name is NoSQL, somewhat related to SQL. यहाँ नो का मतलब वो क्रॉस वाला नो नहीं है, इसका मतलब है नॉट ओनली, मतलब इट इज समथिंग मोर देन SQL, इट इज नॉट ओनली SQL, इट इज मोर देन SQL। तो पहले इतना क्लियर है आप लोगों को कि आखिर हम NoSQL की दुनिया में क्यों आए, कि हडूप में जो इतना सारा डेटा है उसमें क्या मैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग कर सकता हूं? तो उसके लिए मेरे पास NoSQL डेटाबेसेस आए। किसी को कोई डाउट है इसमें पहले तो, कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग क्या होती है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होती है? इज इट क्लियर? यस, नो? Guys, before I deep dive, yes, no, you know difference between transactional and all, very good, very good. तो अब देखो, अब आप खुद सोचो कि अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और उसमें से सिर्फ विपुल की सैलरी को 10% से इंक्रीमेंट करना है, तो हाइव इज वेरी स्लो, हाइव इज नॉट मेंट फॉर इट। सो फॉर दैट वी नीड टू स्टोर द डेटा इन HBase और से एनी NoSQL डेटाबेस, सो दैट कि बिग डेटा भी हमारा, एक तो बिग डेटा का पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, और दूसरा जो फ्रीक्वेंट रीड्स राइट्स हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स लेवल पे, वो हम कर सकें। ओके, तो हडूप में ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग आई NoSQL से, लेकिन NoSQL का मतलब ये नहीं है कि दिस HBase and all they can replace the RDBMS. No, remember guys, HBase या इस तरह के जो NoSQL डेटाबेसेस हैं ये ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग अलाउ करते हैं डेफिनेटली, बट दे कैन नॉट रिप्लेस द RDBMS। वो भी ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग करते हैं, ये भी करते हैं, तो क्वेश्चन आता है फिर भाई ये क्यों नहीं कर सकते रिप्लेस? तो बात ये होती है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ओके, एसिड, एनीवन नो व्हाट इज एसिड इन द वर्ल्ड ऑफ RDBMS? सुना है आपने एसिड वर्ड? ओके, गुड प्रगेशा। ओके, जैसे SQL की दुनिया में एसिड होता है, NoSQL की दुनिया में बेस होता है। लिटमस टेस्ट, राइट? pH, acid, base, all those things. So there is a concept of acid and base. So let me tell you, one second. Okay guys, so if you look at my screen, I am saying that SQL is there for OLTP, which is Hive is for OLAP, right? Then came the NoSQL systems, which are for OLTP over
Hadoop. Okay, but what I'm saying is they cannot replace RDBMS. Okay, RDBMS, they cannot replace this. Why? Because they are base, whereas RDBMS are acid. Now what is acid? Acid has a full form known as atomicity, consistency, isolation, and durability. Okay, you guys should definitely read about it. Let me tell you very basic level of this. So any SQL database is known as an RDBMS system if it is acid compliant. That means it is having the concept of atomicity, consistency, isolation, and durability. What I mean by that is, if you have a table, okay, if you have a table, and what consistency means, if multiple users are trying to read it, they should get the consistent view of the data. ऐसा नहीं है एक को कुछ दिख रहा है दूसरे को कुछ दिख रहा है. So that is consistency. Durability is definitely if I do some transaction and make some changes in the data, that change should be persisted for long term. ऐसा नहीं है कि वो चेंज हुआ और रिवर्ट हो गया. So that should be durable for long term. Isolation is if multiple people are trying to update the data, there should be some isolation between these transactions, as in अगर ये transaction currently हो रही है तो this should wait and then this should happen, वरना तो data inconsistency हो जाएगी. Atomicity is जैसे एक atom होता है, right? The smallest unit, for example, we know कि atom से भी नीचे होती हैं units physics में, but let's consider that atom is the smallest unit. So if yeah Gulzar, so atomicity as in if you are updating a table, there are certain rows, right? There are concept of rows. So your change and even there are concept of cells or columns. So atomicity means if you are making any change at any smallest level, that should be allowed and it should be logged during that time. मतलब अगर आप कोई change कर रहे हो तो उस टाइम पे कोई और कोई change ना कर पाए, तो वो जो particular row है या जो particular column है वो logged हो जाए for you. तो ये चीजें मतलब definitely they are related, but atomicity, consistency, isolation and durability, ये जो property है वो एक NoSQL में नहीं हो सकती सारी की सारी, जबकि एक रियल वर्ल्ड सिस्टम में ये प्रॉपर्टीज जरूरी है. मतलब अगर आप बैंक में गए या आप एटीएम पे गए और आपने पैसे निकाले खाते में से, तो आपका सिस्टम एसिड कंप्लायंट होना चाहिए. ओके, 1 सेकेंड.
Yeah, guys, got urgent work. 1 second. Isolation. Does MySQL also contains? हाँ गुलजार, कोई भी RDBMS एसिड कंप्लायंट होता है, चाहे वो MySQL हो, चाहे Oracle हो, कोई भी. तो what I was telling you is कि आप अगर ATM पे गए और मान लो सेम टाइम पे आप नेट बैंकिंग पे भी लॉगिन हुए, तो दोनों जगह आपको सेम अमाउंट दिखाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ATM से 10,000 रुपए निकाल लिए और नेट बैंकिंग में अभी भी आपको रिमेनिंग अमाउंट पूरा दिख रहा है. तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आप तो क्या करोगे, विद इन सेकेंड्स नेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन कर दोगे और दो जगह से पैसे निकाल लोगे, एक फिजिकल कैश और एक आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देना है. तो दैट मीन्स RDBMS सिस्टम शुड बी वेरी स्मार्ट, दे शुड बी एसिड कंप्लायंट, दे शुड बी इमीडिएटली कंसिस्टेंट. यहाँ पे कंसिस्टेंसी वाली प्रॉपर्टी आ गई उनकी, राइट, कि चाहे आप नेट बैंकिंग से एक्सेस कर रहे हो अपना अकाउंट या आप एक ATM से कर रहे हो, सिस्टम शुड बी कंसिस्टेंट, राइट. तो this acid compliance, right, this acid compliance is very important for an RDBMS. Varsha, I'll tell you. Okay, but all these acid things, they cannot be provided by a NoSQL database. That's why they cannot replace an RDBMS. Okay, Gulzar, MySQL is a database and SQL is a language. Okay, SQL can be same for MySQL as well as Oracle. Okay, SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, MySQL एक प्रोडक्ट है. ओके, तो NoSQL has a base property. Base is also having a full form which is basically available, BA, which is like basically available, and something for this SE, I think scalable, and something here. 1 second. Okay, so if you look at acid and the base are consistency models for RDBMS and NoSQL respectively. So RDBMSs are acid and NoSQLs are base. Acid transactions are far more pessimistic, that is, they are more worried about data safety, whereas base is like basic availability. The database appears to work most of the time. बस मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ इसकी, then I'll explain you. Okay, this is the thing. Yeah, so base is like basically available, soft state and eventual, basically available, soft state and eventual consistency. अब इसका मतलब क्या है, हम पहले तो E वाली चीज की बात करते हैं कि अगर मैं HBase को अपने ATM सिस्टम, मतलब एक बैंक कहे कि भाई Oracle पीछे से हटा दो और HBase डाल दो क्योंकि वो भी तो OLTP है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? NoSQL databases are not consistent, they are eventually consistent. Eventually consistent मतलब कि थोड़ी देर बाद कंसिस्टेंसी आ जाएगी. मतलब हो सकता है शुरू के 5-10 सेकेंड मैं ATM से लॉगिन कर रहा हूं तो मुझे कुछ अमाउंट दिखे, और अगर मैं नेट बैंकिंग से लॉगिन कर रहा हूं कुछ अमाउंट दिखे, लेकिन 5-10 सेकेंड या 15 सेकेंड बाद मुझे सेम अमाउंट दिख जाएगा. ठीक है, लेकिन आप लोग खुद सोचो, क्या बैंक इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? हैकर्स को आप कितना इजी टारगेट दे रहे हो आपके बैंक खाली करने का. तो you cannot use a NoSQL system for a banking transaction, right? Because it's eventual consistent, not immediate consistent. Immediately consistent नहीं है. Stores exhibit consistency at some later point, right? Lazily at the read time, not immediately.
basically available. That means your database can go down. For example, giving you a rough idea, say my database is having 99.9% availability. 99.9% availability. इसका मतलब क्या होता है? हर 1000 हिट में एक बार वो फेल हो जाएगा. मतलब हर 1000, अगर 1000 लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उनमें से एक बंदे के लिए वो डाउन दिखाएगा, क्योंकि 99.9% अवेलेबिलिटी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये जो 99.9, 99, 95 ऐसे हम बोलते हैं. तो डेटाबेस अपीयर्स टू वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम बट इट कैन बी डाउन. अब आप सोचो कि आप एटीएम गए और साइट डाउन पड़ी है, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, राइट? आप नेट बैंकिंग एक्सेस कर रहे हो, डाउन पड़ी है. You don't want that to happen. You want it to be up always. So NoSQL databases cannot provide you 100% availability. और ये तो हमने Hadoop का ही property भी सीखा है. There is a single point of failure which is the master node. Definitely we have primary, secondary masters, but still there is a downtime, right? So NoSQLs are also coming from Hadoop systems. So they also have some limited availability. So that's the problem. You cannot use them for your banking softwares. Okay. And then there is this soft state, which is stores don't have to be write consistent, nor do different replicas have to be mutually consistent at all the times. So again, this is related to the consistency thing that we are talking about. It means that if you are writing some data, it will always be replicated. Hadoop हो, NoSQL हो, अगर आपने एक कुछ राइट किया उसकी 2 कॉपीज हमेशा बनेंगी, राइट? बट सॉफ्ट स्टेट ये कहती है कि भैया आपकी एक कॉपी राइट हो गई तो मैं अपनी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल मार्क कर दूंगा. मान लो राहुल इज राइटिंग सम डेटा इन NoSQL, मास्टर कॉपी उसकी राइट हो गई तो मैं प्रोग्राम को बोल दूंगा सक्सेसफुल हो गया, जबकि उसकी अभी 2 कॉपियां और जो थी वो बनी नहीं थी. लेकिन आपने बोल दिया भैया सक्सेसफुल हो गया और ये 2 कॉपियां पीछे बनती रहेंगी. अब मान लो कि उसी समय किसी ने उस डेटा को रीड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी और वो रीड रिक्वेस्ट इस मशीन पे आ गई जहां पर वो डेटा अभी तक राइट नहीं हुआ था या अपडेट नहीं हुआ था, तो उसको तो पुराना डेटा दिख जाएगा. तो this soft state thing is also related to consistency, but at the replica level. Okay, so you don't get confused, but the major thing is basically available and eventual consistency. Whereas RDBMS systems always consistent and 100% availability. 100% होता नहीं है कुछ, but yes, we need to guarantee they are 100% available. So guys, you are getting the difference between acid and base. Read more about this, but you are getting the crux. Replica is 3, NoSQL maybe are 3. Main copy and 2 more copy. You read about it, replica level thing. That is soft state. So just read about soft state. I'm writing it here. Okay, read about soft state. If you don't get it, we will discuss. Soft state is related to consistency, but at the replica level, we will talk about it when we will talk about edge-based architecture. But read about it. Soft state. So there is a hard state and a soft state in the world of databases. Okay. तो guys, are you getting it कि अगर मेरे पास Hadoop में भी एक ट्रांजेक्शनल सिस्टम है तो वो सिस्टम RDBMS को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? Because of this acid and base thing. Okay. Okay, before even you ask any question. Now, there is one more important property in the world of NoSQL, which is known as cap theorem. Cap theorem is the most important thing in the field of big data or in the field of NoSQL, the most important thing. अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है ये 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 100%.
what is cap theorem? Anyone know what is cap? Gomini, Aditi, Rahul. Guys, anyone know what is cap? There is a full form to cap. Okay, let me tell you. The full form of cap is consistency, availability and partition tolerance. मतलब जो अभी हमने बेस की बात की थी उसी को थोड़ा और रिफाइन करके एक नई थ्योरम दे दी गई जिसको हम कैप थ्योरम कहते हैं. कैप थ्योरम नो सीक्वल पे अप्लाई होती है. कैप थ्योरम क्या कहती है? अगर आपने बेस थ्योरम सीख ली एक तरह से तो आप कैप थ्योरम भी सीख लेंगे. कैप थ्योरम ये कहती है कि कोई भी नो एसक्यूएल डेटाबेस एक बार में इन तीन में से दो ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकता है. तीन प्रॉपर्टी दिख रही है, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस. तो एनी नो एसक्यूएल डेटाबेस can only and only satisfy two of these. Any database that can satisfy all three of these actually will become a RDBMS. So RDBMS satisfies all three. Okay. Or in some cases even RDBMS does not support all three. I'll tell you there are cases. But for a NoSQL database, it cannot support all three. So now the question comes, what is cap theorem? So cap theorem, consistency definitely, availability okay, partition tolerance okay. जो हमने ऊपर तीन चीजें थी वही यहाँ है. तो दोबारा देख लेते हैं. अगर मैं एक नो सीक्वल सिस्टम की बात करूं, मान लीजिए एचबेस, तो एचबेस एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है. एचबेस का आर्किटेक्चर जब हम देखेंगे तो देयर इज अ मास्टर नोड एंड देन देयर आर स्लेव नोड्स. Master is single, so if it goes down, it is down. I think Rahul, in the last class, you are not able to access HBase because of Zookeeper, right, guys? I was telling few of you because of Zookeeper, few of you are not able to access HBase, and because it was a single point of failure, it does not have availability. So if someone asks you about HBase, so HBase is consistent tolerance, but it is not available. It can go down. मतलब it is basically available. It is not 100% available. Okay. Consistency वही कि अगर मेरी एक नोड में कुछ अपडेट हुआ तो वो सारी नोड्स में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर एक यूजर को मैं कुछ डेटा दिखा रहा हूं तो बाकी सारे यूजर्स को भी सेम ही डेटा दिखाना है. वो मेरी कंसिस्टेंसी है. ऐसा ना हो कि एक यूजर को तो वैल्यू दिख रही है 100 और दूसरे को दिख रही है 50. So that is your consistency. Partition tolerance is soft state. मतलब partition tolerance क्या होता है? अगर मेरा कोई डेटा एक पार्टीशन में है और दूसरी पार्टीशन में उसका कोई रेप्लिका है, मान लो यहां और यहां उसका कोई रेप्लिका है, ठीक है, तो अगर ये मशीन डाउन हो जाती है, अगर मतलब देखो ये सारी क्या है, मशीन्स हैं जिनको हम पार्टीशंस भी कह देते हैं. अगर ये मशीन डाउन हो जाती है तो मेरा डेटा अवेलेबल रहे, डेटा लॉस ना हो. पार्टीशन टॉलरेंस मतलब if one partition is down or one machine is down, I can still access my data. That is what your partition tolerance is. You can tolerate the failure of a partition or a machine. So that's what the cap theorem is. Okay, guys, any question? Okay, so let's go into, so guys, you are now clear. If someone asks you in interview difference between an RDBMS and a NoSQL, even though both supports OLTP, they support OLTP in a different way. NoSQL have certain limitations which are explained by the base theorem or the cap theorem. Okay, so now what we need to learn is, गुलजार मैंने ये लिंक शेयर कर दिया, आप ये स्टैक ओवरफ्लो वाले से पढ़ लेना, ठीक है.
तो अब क्वेश्चन ये आता है गाइस, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था नो सीक्वल डेटाबेसेस बहुत तरह के होते हैं, राइट? मेजरली 4 तरह के होते हैं। तो बिफोर वी गो इनटू कैप थ्योरम, लेट मी टेल यू दिस। सो हम अपने नो सीक्वल डेटाबेसेस को दो तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं टाइप ऑफ नो सीक्वल डेटाबेस। टाइप ऑफ नो सीक्वल डेटाबेस एज इन, if you look at my screen, I told you in the last class that a NoSQL database can belong to a key value type, column family type, graph type, or document type. So if someone asks you, can you tell me few document type NoSQL databases? MongoDB. Graph, Neo4j. Column family, it's HBase. Key value, it's memory databases. There are a lot of memory based databases, MemCacheDB and all. So this is one kind of organization. Then there is another kind of organization which is based on CAP theorem. Okay, so if you look at my screen, guys, you will see consistency, availability, partition tolerance. So what we are talking about is, see, at any given point of time, only two can be satisfied, and only any two. So let's understand one by one. What do you mean by consistency? All clients see the same data at the same time. मतलब अगर मैं अपने सिस्टम से डिफरेंट मोड के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे सेम ही डेटा दिखे, चाहे मैं नेट बैंकिंग से लॉगिन करूं, चाहे मैं एटीएम से लॉगिन करूं, चाहे मैं मैकबुक से लॉगिन करूं या मैं विंडोज से लॉगिन करूं, चाहे मैं आईपैड से लॉगिन करूं या मोबाइल से लॉगिन करूं, चाहे मैं ऐप से लॉगिन करूं या मैं वेबसाइट से लॉगिन करूं. ओके, दैट इज कंसिस्टेंसी. Availability means system should be up and running. Okay, that is important. Always up and running means master node should not be down. Partition tolerance is in case one or two machines are down, the data machines, I still have replicas or partitions to help me. Okay, so now based on this they have divided the products. So as I told you, if it's consistent and available, it is a RDBMS. एक RDBMS सिस्टम हमेशा अप एंड रनिंग होना चाहिए. आप एटीएम गए, पैसा निकाला, कंसिस्टेंट होना चाहिए. चाहे आप कहीं से भी पैसा निकालो, कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो कैप थ्योरम में जो सी और ए को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं अपने RDBMSs. MySQL, SQL Server, MariaDB, Oracle. Very good. Then I told you about Apache HBase, right? There is a single point of failure, master node. So it cannot be available, but it can be consistent, it can be partition tolerance, but it does not have the property of availability. And same is the case with MongoDB and Redis. Okay, MongoDB is a document based database, Redis is a key value, जो हम अभी पिछली कैटेगरीज की बात कर रहे थे. Key value, this is column family. Okay, this is column family, this is document oriented, and this is key value, and all three of them belongs to consistent and partition tolerance thing. Then there is third category of availability and partition tolerance, but they are not consistent. Couch database is very useful nowadays. I have used it immensely. CouchDB, Cassandra. Okay, so Couch database is like MongoDB, Cassandra is like HBase, and React is like Redis. Okay, so what I mean to say is CouchDB is a document oriented database, Cassandra is a column family, React is a key value, right? The category that we discussed before this, right? So any questions on this, guys? These two kinds of organizations. One was
primarily based on the type of the NoSQL, and second is based on the CAP theorem. Any question or is it clear? मतलब डेफिनेटली कोई ये रट नहीं सकता है कि कौन सा क्या है, आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है कि काउचबेस क्या है, कैसेंड्रा क्या है, वो समय के साथ आपको पता लग जाएगा. हाँ बोलो. Sir, just like we have to pay for cloud and all, we have to pay for RDBMS also. डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर. देखो नहीं वेट, क्लाउड के लिए आप पे क्यों करते हो पहले ये बताओ. Sir, to buy some space for storing the data and all. Okay. Which kind of data? Sir, जैसे sites वगैरह पे you need to collect a lot of data like purchases and all. जैसे let's just suppose merchandise store है online, so that kind of data that needs to be stored somewhere. So we buy the space on cloud so that we can analyze and process it. Okay. You know about Samsung Cloud और Google Cloud, right? आप सबके Yes, फोन sir. में Google Drive भी होगा, right? तो are you talking about those kind of things like Google Drive or say there is something else also, right? We buy space glass or something. What is that? There is something. There are a lot of apps that are available, right? Where you can upload your data, like Google Drive की तरह और भी बहुत सारी हैं, Samsung Cloud and all. So are you talking about that, Nishtha? No, sir, I'm Or you- talking about cloud. You're talking about AWS? Yes, sir, AWS cloud. Okay. तो देखो जब भी वेरी गुड क्वेश्चन निष्ठा, जब भी हम इस तरह क्लाउड बोलते हैं ना, तो क्लाउड एक बड़ा ही वेग टर्म है. क्लाउड से मतलब ये हो सकता है कि आप गूगल ड्राइव पे जो अपने या गूगल फोटोज, आपके फोन में गूगल फोटोज है, राइट? आप जितनी भी फोटो खींचते हो सारी अपलोड हो जाती है गूगल फोटोज पे, राइट? बाय डिफॉल्ट अगर एंड्रॉइड में आपका है. तो हो तो वहां पे भी क्लाउड का यूज रहा है, आपकी सारी फोटोज क्लाउड पे जा रही हैं. इवन जीमेल जो आप यूज कर रहे हो सारा क्लाउड पे, आपका पूरा जीमेल का डेटा, तो डेटा तो वहां पे भी पड़ा है. आप अगर किसी को अटैचमेंट ऐसा ईमेल भेजते हो तो वो गूगल के पास पहुंच जाती है, तो वो भी क्लाउड है. तो व्हेन वी से क्लाउड, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउड. बट नाउ व्हेन यू एज अ इंजीनियर talk about cloud, you should be very specific. You are talking about cloud as a platform, right? Where you want to do some engineering work. And now when I say engineering work, that means you don't want to use services like Google Drive, Gmail, or Google Photos. No. You want to use cloud for development like AWS, GCP, right? Till now clear, Nishtha? Or for analytics. Yes, very Yes. good. अब क्वेश्चन आता है कि अगर निष्ठा ने AWS क्लाउड खरीदा है, परचेज किया है, तो व्हाट शी विल डू? तो यू विल अपलोड योर डेटा ऑन द AWS क्लाउड फॉर डूइंग द एनालिटिक्स. नाउ दैट AWS क्लाउड कैन बी अ Hadoop सिस्टम आल्सो. आप कहते हो कि मैंने AWS पे Hadoop खरीदा, तो मतलब आपका जो Hadoop है वो क्लाउड पे चल रहा है, राइट? तो अब आप क्या Hadoop जो क्लाउड पे चल रहा है उसमें डेटा स्टोर कर रहे हो सो दैट कि आप उसके ऊपर मैप रिड्यूस चला सको, तो देन दैट इज एनालिटिक्स. बट इफ यू से नहीं मैं तो अपना डेटा जीमेल में या गूगल फोटोज में रख रहा हूं या रख रही हूं, तो दैट इज नॉट एनालिटिक्स. इट्स लाइक यू आर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट बाय पेइंग फॉर इट, राइट? तो जैसे आप लोगों की मशीन में इस समय लैपटॉप्स में वर्चुअल मशीन्स हैं, वो आपके फिजिकल लैपटॉप्स में है. लेकिन मैंने आप लोगों को AWS का लॉगिन करके भी दिखाया था कि रियल वर्ल्ड में हम AWS पे मशीन्स खरीदते और फिर उन पे लॉगिन करते हैं, राइट? एंड देन वी अपलोड द डेटा देयर. तो इसको यूज करके हम AWS पे भी डेटा भेज सकते हैं, कहीं पे भी डेटा डाल सकते हैं और फिर उसके ऊपर हम एनालिटिक्स कर सकते हैं. ओके निष्ठा? तो नाउ यू rephrase your question. Sir, so we just like cloud and all we need. So my question will be the same. Just like cloud, we need to purchase a platform for analysis in RDB. वेरी गुड. तो देखो अब फिर से मैं वही बताता हूँ कि जब आप AWS पे गए
तो AWS के क्लाउड पे आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। आपके पास SQL सर्वर भी अवेलेबल है, काउचबेस, एचबेस, कैसेंड्रा, रेडिस, मोंगोडीबी, सब कुछ है। लेकिन अब आप अमेजोन को कहते हो कि मैं आपके क्लाउड पे काउच बेस एक्सेस करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप सिर्फ उसका पैसा दोगे। तो AWS provides you all these things. It's on to you what you want to buy from them. But yes, you have to pay for any one of these. Whichever you want to use, you have to pay for that. And इनमें से 90% of the things will be on cloud. But हो सकता है, just I'm giving you a vague example, कि AWS कहता है भैया मेरे क्लाउड में MySQL नहीं है, मेरे पास SQL सर्वर और MariaDB है, लेकिन बाकी चीजें नहीं है। तो ठीक है, आप कहोगे ठीक है मुझे तो क्लाउड पे ही डेटाबेस सेटअप करना है अपना, Amazon क्लाउड पे, तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर लोगे। बट MySQL क्लाउड पे अभी तक है ही नहीं, मान लो वो सिर्फ फिजिकल मशीन में ही है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, MySQL भी अवेलेबल होता है क्लाउड में। तो आप समझ रहे हो ना कि क्लाउड इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। अब वहां पर आप हडूप सेट करना चाहते हो, या आप सिर्फ एक NoSQL, अच्छा NoSQL आप बिना हडूप के भी यूज कर सकते हो। ये कोई भी डेटाबेस जो आपको यहाँ NoSQL के दिख रहे हैं, एक्सेप्ट दीज, ये वाले तो RDBMS है, बाकी ये सारे NoSQL डेटाबेसेस हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सब आप बिना हडूप के यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि एच बेस का तो फुल फॉर्म ही हडूप बेस है। अगर आपको एच बेस पे काम करना है तो आपको हडूप चाहिए। इन सब के लिए आपको हडूप की कोई जरूरत नहीं है गाइस। You don't need Hadoop for MongoDB, Redis, React, Cassandra, Couchbase. No, 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 no. Only and only for HBase you need Hadoop. Not for any one of these. They are independent of Hadoop. Only this single NoSQL database needs Hadoop. Because ये Hadoop का ही एक बच्चा है, ये उसी में से निकला है। लेकिन बाकी सब independent products हैं for handling big data without Hadoop. None of them runs MapReduce. None of these runs MapReduce. ओके और यहां तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये तो RDBMS है, सिर्फ HBase है जो हडूप से रिलेटेड है। क्लियर? सो दिस, बट क्लाउड पे आपको सब अवेलेबल है निष्ठा। आप कहते हो मुझे क्लाउड पे अपना RDBMS सेट करना है, ओके। आप कहते हो मुझे क्लाउड पे हडूप सेट करना है विद HBase, ओके। आप कहते हो नहीं नहीं मुझे क्लाउड पे हडूप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कैसेंड्रा चाहिए, बिकॉज मेरा जो बिग डेटा है वो मैं कैसेंड्रा से हैंडल करना चाहता हूं। यू कैन डू दैट गाइज। ये थोड़ा हो जाता है ज्यादा चीजें, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, बट समझ आ रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल। निष्ठा, आर यू गेटिंग इट? सर थोड़ा ट्रिकी है पर थोड़ा थोड़ा। सर Okay, so okay. RDBMS Yes. is a platform that's bought on cloud. It can be on cloud, it can be on premise. Okay. ऑन प्रीमाइस का मतलब है, निष्ठा कहती है ऑरेकल को कि मुझे आपका MySQL चाहिए, लेकिन जो सर्वर है मेरे घर पे रखो। तो वहां से वो फ्लाइट से MySQL वाले अपना सर्वर लेकर आएंगे आपके घर पे, और उसमें वो आपके घर में उसको सेट करके जाएंगे, बड़ी सी एक सर्वर मशीन ला के रख जाएंगे। लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं मुझे तो क्लाउड पे चाहिए, तो वो अमेरिका में आपके लिए सेटअप कर देंगे और आपको बोलेंगे आप इंटरनेट से एक्सेस करो। क्लाउड का Okay, ये तो sir. फायदा है। Yes, गेटिंग sir. इट? Yes, yes. लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे तो ऑन प्रीमाइस चाहिए। ऑन प्रीमाइस मतलब मेरे घर में ही चाहिए सर्वर, मेरे को डेटा सिक्योरिटी का इशू है, मैं तो अपने घर में 4 बॉडीगार्ड रखूंगी अपने डेटाबेस के चारों तरफ। दैट मीन्स यू कैन नॉट ट्रस्ट द क्लाउड प्रोवाइडर। you are asking them for the services, but you are having your own bodyguards, your own security center where your data is banks Sir, so banks
Hi everyone, please ping me if I'm audible and my screen is visible. Okay guys, perfect, thank you. Audio visible, good. Okay. तो अभी तक हम लोगों ने प्राइमरली जिन चीजों की बात की वो हमें ये बताता है कि वी हैव बिग डेटा, we read scoop flume kafka something to store it in hdfs. On top of that we can create hive tables or we can do a pig kind of analysis, right? But all of these are for OLAP, not OLTP. So for OLTP we have HBase, okay, or for that matter any other NoSQL database. But HBase comes by default with Hadoop. Other databases, they don't come with Hadoop, and they can work even without Hadoop also, like MongoDB, Couchbase, Cassandra and all. Okay. So if you look here on the screen, we have talked about it multiple times, Hadoop ecosystem and HBase as part of Hadoop system. So you have HDFS where all your data is. HBase, which is a column family database we talked about. Now, when we talk about HBase, HBase, or whenever you are inserting any data in HBase, HBase का भी अपना कोई स्टोरेज तो होता नहीं है, जैसे हाइव का अपना कोई स्टोरेज नहीं होता, राइट? तो even HBase also stores everything in HDFS. So HBase का जो डेटा होता है वो फाइल की फॉर्म में होता है, which are stored in HDFS only. That's why I was saying कि HBase cannot be used without HDFS or for that matter Hadoop. Yeah, Gulzar, I'm just talking about this first screen only. I'll talk about others also. So what I'm saying is, in Hadoop, we have so far talked about MapReduce, which is a Java-based system. We have talked about Hive, Pig, Scoop. We know RDBMS. We talked about DWBI, where we talked about ETL and BI reporting systems, right? And now we are talking about the last component, which is HBase, which is a column family database. HBase data is also stored in HDFS. Zookeeper is a very important component which makes sure that HBase is up and running. So ये Zookeeper की responsibility है कि HBase down now. We also talked about some serialization, deserialization, Faradays, Avro, ORC, RC. So pretty much you guys are aware about everything in this screen. So now we are talking about HBase. So Apache HBase, again because Hadoop is also from Apache, so HBase is also from Apache company. So HBase is an open source project which is storing the data on HDFS only. But here the data is stored in table, rows and columns. But this table, rows and columns, they are different from Hive. आप सोचोगे Hive में भी तो table होती है, उसमें rows और columns होते हैं. But इसमें थोड़ा सा फर्क है. We will see that. Okay. So now, see, what I told you is HDFS is good for batch processing.
और आपको उनके ऊपर एग्रीगेट एनालिसिस करना है, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, दैट काइंड ऑफ एनालिसिस, दैट इज लाइक बैच प्रोसेसिंग। मतलब आप एक बार में सारे डेटा को प्रोसेस करना चाहते हो या मेजॉरिटी ऑफ द डेटा को प्रोसेस करना चाहते हो, तो कि मुझे ये बताओ कि ये जो रिकॉर्ड है राहुल का है और राहुल का एड्रेस क्या है। For this kind of analysis, Hadoop is not created. Hadoop का काम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना नहीं है, बैच ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को। जब हम इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड को प्रोसेस करने की बात करते हैं, मान लो राहुल का एड्रेस चेंज करना है, तो ये जो इस तरह का एनालिसिस होता है जो सिंगल रिकॉर्ड पे चलता है, उसको हम लुकअप कहते हैं। You are looking up for a particular record, right? You are looking for a particular record or a particular data set or a row. So that is known as lookup. So for fast record level lookup, we have HBase, not HDFS, or for that matter Hive. HDFS or Hive, they are not good for individual record lookup. They are good for batch of records. ओके, सो रिमेंबर दिस कि अगर मैं आपको कल को मान लो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस देता हूं, एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शंस हुई हैं मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, और आपसे बोलता हूं कि जस्ट टेल मी कि टोटल अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कितना हुई है एंड ग्रुप बाय से कंट्री, कि हर कंट्री में टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, तो दैट इज अ बैच प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट. यू यूज HDFS और Hive, बट यू विल नॉट यूज HBase. बट जब मैं ये कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर स्टोर में, इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट मान लो साउथ दिल्ली के साउथ एक्स में ये जो पर्टिकुलर मैकडी का स्टोर है, इस पर्टिकुलर स्टोर में कितनी सेल हुई है, तो फॉर दैट वी हैव HBase. व्हेन यू हैव रिकॉर्ड लेवल लुकअप और यू हैव रिकॉर्ड लेवल इंसर्शन, यू वांट टू डू रिकॉर्ड लेवल अपडेट्स, कि भाई एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड में कोई एंट्री चेंज करनी है या एक नई रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है या डिलीट करनी है. सो फॉर दैट वी हैव HBase. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये मल्टीपल फ्लाइट्स का डेटा है, तो किसी फ्लाइट का अगर प्राइस चेंज हो गया तो आपको वो अपडेट करना होगा बार बार, राइट? अगर यहाँ पर मेरे पास हर फ्लाइट का नंबर, उसका सोर्स एंड टारगेट या डेस्टिनेशन और प्राइस है, लेकिन प्राइस उसका हर 5-5 मिनट में चेंज होता जा रहा है, तो अगर इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो आई विल नॉट यूज Hive, बिकॉज Hive इज नॉट मेंट फॉर अपडेट्स. आई टोल्ड यू, राइट? Hive में अगर आपने एक बार टेबल में कोई डेटा डाल दिया, you will not change it. You will just use Hive for running your SQL queries for analytics. But if you have to keep updating the records, then you should use HBase or any NoSQL database. But there is this very important thing in HBase. For example, for Rahul, I know his current salary, and now I update this salary. Okay, so initially it was say 1 lakh, I updated it to 2 lakh. Now the good thing about HBase is it stores the older values also. जब भी आप देखोगे आपको नई वैल्यू ही मिलेंगी, लेकिन HBase पुरानी वैल्यूज को भी स्टोर करके रखता है in the form of versions. This will be the latest version, but you can ask up to last 3 versions और last 3 values. मान लो राहुल की सैलरी 1 लाख थी, फिर 2 लाख हो गई, फिर 3 लाख हो गई, फिर 4 लाख हो गई. अब करंटली आप जब भी राहुल की सैलरी मांगोगे वो 4 लाख आएगी, लेकिन आप ये पूछना चाहते हो कि उसकी प्रीवियस सैलरी क्या थी, तो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट. उससे भी प्रीवियस क्या थी? यस. उससे भी प्रीवियस क्या थी? यस. तो दैट मीन्स every cell have versions, every value have versions. मान लो राहुल का एड्रेस है, करंट एड्रेस, उसकी वैल्यू आपने चेंज कर दी, तो आप जब भी देखोगे तो आपको करंट एड्रेस दिखेगा, लेकिन आप पुराना एड्रेस भी यहां से निकाल सकते हो बाय आस्किंग फॉर द ओल्डर वर्जन.
we will do that, but this is very important. Getting it? तो HBase में हम डेटा फ्रीक्वेंटली अपडेट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं रिकॉर्ड लेवल पे, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रिकॉर्ड लेवल पे, इंस्टेड ऑफ बैच ऑफ रिकॉर्ड्स. Okay, and for every update that you do, there is a version that is maintained. By default you will always get the current version, but you can check the older version values also. So Gulzar, it depends how many old versions you want to keep. By default it keep last 3 versions. If you want, you can keep last 10 versions also, 20 also. There are a property which we can set. Okay, so now let's talk about the edge-based architecture. So what happens is, edge-based architecture is, it contains a master and slaves. In the edge-based architecture, there is a master known as H master. So if you look at my screen, this one is the H master or edge-based master, and then these machines are the slave machines. Here slave machines are known as region servers, region server, H region server. Okay, that's the very first thing. So you have a master and then you have slaves. Who is making sure that master is up and running? Zookeeper. So if you are, अगर आप कभी HBase को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अगर आपका HBase मतलब HBase डाउन है, that means कि Zookeeper में कुछ प्रॉब्लम हुई है, you will restart Zookeeper, or you will ask Zookeeper to rather restart the HBase, and Zookeeper will take care of it. There are certain commands of doing that. Okay guys, so in Hadoop by default we always have the HBase, and HBase is having a H master and H region servers. Zookeeper makes sure that master is always up and running. Now client, like if you want to read or write any data in HBase, you will first talk to Zookeeper. Zookeeper will talk to H master, and H master will talk to region servers. Now let's look further into this, the HBase thing. In HBase, if you are storing a table, okay, हम यहाँ पे भी tables बनाते हैं, but tables are splitted into regions. So if I have a big table, it's split it into regions, like H region, you can see here, H region here. Further, the table, like the actual file in which the HBase data is stored, is known as H file. ये I think visible है कि नहीं? Let me make it bigger. Okay. तो guys होता क्या है कि आपके जो नोड्स हैं यहाँ पे, डेटा नोड्स, हम डेटा नोड्स को यहाँ पे रीजन सर्वर्स कहते हैं. रीजन सर्वर्स के अंदर there are regions, and the actual data, the actual बड़ी HBase टेबल है और वो 3-4 H files में स्प्लिट हो जाएगी. तो ultimately you have this H file which is the smallest unit of storage in HBase. We will talk about this store file and mem store also, but and this hlog also. But first of all, understand that you have a master and slave. Slaves are known as region servers. A region server can have multiple regions. So we will talk about these regions क्या होते हैं. Within those regions there are multiple H files. So actual data is of HBase is inside H file. So this H file is what is actually stored in the HDFS. Okay. So H files are actually stored in the HDFS, or you can see that these H files are mapped to the Hadoop data nodes. Okay. तो अभी हम अगर एक बेसिक आर्किटेक्चर की बात करें तो
if a client sent a file, he will send a file to Zookeeper. Zookeeper will ask HMaster like where to store those files. It will check the region servers where it has the available space. Those region servers internally will store that file into smaller H files. Those H files will be mapped to the actual blocks, the data node blocks. Okay. So we will further talk about this in detail, but let's go ahead. Now see this. HBase depends on Zookeeper. So this is the Zookeeper, which makes sure that the master is always up and running. By default, HBase manages the Zookeeper instance. For example, it starts and stops the Zookeeper. What it means to say here is, see, HMaster and HAger servers register themselves with Zookeeper. सबसे पहला हमारे पास होता है Zookeeper. Zookeeper के अंदर हमेशा 3 machines होती हैं. Zookeeper is a group of 3 machines, minimum 3 machines, so that you can have a master selection process. So you understand it like this, that this Zookeeper cluster contains your 3 master nodes. So if one master is down, another master is available. If that is also down, another master is available. So Zookeeper ultimately have a collection of 3 master nodes to provide you high availability. आप लोगों का जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो किसी का डाउन इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास Zookeeper को देने के लिए 3 मशीन्स नहीं है. Zookeeper को सिर्फ एक ही मशीन मिल रही है और अगर वो भी डाउन हो गई तो Zookeeper कुछ नहीं कर सकता. ओके, तो Zookeeper ideally have minimum 3 machines, which is known as ensemble. So normally if you look at Zookeeper, guys, like whenever I want Zookeeper to do any work for me, Zookeeper have minimum of 3 machines. If you see follower, leader and follower. So Zookeeper always have minimum 3 machines, out of which one is always leader. Other 2 are the followers. Whenever a client wants to read or write a file, he talks to Zookeeper. Okay. And Zookeeper actually talks to the leader to get that work done. मतलब क्लाइंट जो है वो किसी भी मशीन से कनेक्ट कर सकता है. अगर वो लीडर से कनेक्ट करता है तो डायरेक्टली उसका काम हो जाएगा. अगर वो फॉलोवर से कनेक्ट करता है तो वो लीडर के थ्रू काम होगा. तो व्हाट आई मीन टू से, मिनिमम 3 machines. If you even see here, Zookeeper needs 3 machines minimum. Let's see here. Apache Zookeeper have minimum 3 machines, 1, 2, 3. This is known as an ensemble or a group of machines, group of 3 machines, ensemble. Even if you look here, a Zookeeper ensemble contains 3 machines minimum, or odd number of machines, minimum 3, out of which one is leader, other 2 are follower, and each machine contains the directory structure or the folder known as Z node. Like you have a parent node, then child, child, child. So it's like Z nodes. Okay. So there is leaders and followers. Now what happens is, whenever a client wants to read some file, whenever they want to read anything, they can read it from the follower. But whenever they want to write something, it needs to be done through leader. आप HBase में जाते हो और कुछ डेटा रीड करना चाहते हो
तो अगर आप फॉलोवर से भी कनेक्ट कर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. बट यू से नो, आई वांट टू राइट सम डेटा. You cannot write it without the leader's approval. So because ऐसा समझो कि फॉलोवर के पास ऑलरेडी वो डेटा है जिसको आप रीड कर सकते हो, लेकिन राइट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा लीडर के पास है. जब लीडर वो डेटा राइट कर देता है तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट फॉलोवर्स को कि भाई मैंने ये डेटा, ये लेटेस्ट डेटा है, और उसकी कॉपी इनको भेज देता है. तो जैसे ये जो क्लाइंट है आप देखेंगे, बाकी सारे क्लाइंट जो हैं वो डेटा रीड करने के लिए आ रहे हैं, मान लो एचबीएस से डेटा रीड करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जो है वो राइट करने के लिए आया और गलती से ये फॉलोवर पे कनेक्ट कर गया. तो फॉलोवर विल आस्क लीडर टू सर्व हिज रिक्वेस्ट. Once leader serve that request, it will broadcast that back to followers that now you can have a latest copy of data, so that if other people want to read, they will get the latest copy of data. So this is known as distributed cluster management or distributed cluster coordination done by the zookeeper. So if you have one machine, two machine, three machines, each machine will have its own folder structure known as Z node, like root folder के अंदर service folder, उसके अंदर election path, like this is one of the path where you have multiple Z nodes. Okay, so leader always write, rest always reads. The followers only read the data. Okay, 1 second. So Gulzar, it is edge-based master and edge-based region server. Nishtha, Apache Ambari is a different tool. Okay, Apache Ambari is it's meant to manage the services. Like there is Cloudera Manager. So Ambari को यूज करके हम सर्विसेज अप एंड डाउन कर सकते हैं, वो एक अलग टूल है. गुलजार, ऑड नंबर के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आई विल टेल यू. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक यू सी हियर मास्टर एंड लीडर एंड फॉलोवर, राइट? तो ये लीडर फॉलोवर का जो सिलेक्शन होता है उस प्रोसेस को करने के लिए ऑड नंबर होना बहुत जरूरी है. ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट. देयर इज अ इलेक्शन प्रोसेस दैट हैपेंस to select the master. Okay, so now what we understood here is that zookeeper, so whenever we talk about edge-based, the edge-based architecture is incomplete without zookeeper. Zookeeper ensemble contains three machines, three master machines, out of which one will be leader, another two will be followers, and for reads you connect to any of the machine, but for write it is always served by the leader. Data is stored in the region servers, which is nothing but your data nodes, and the actual data, like region server mein data is in the form of H files, but actual data is in HDFS in form of blocks, data blocks. So edge-based master or H master is on the primary or secondary name node, whereas the slave nodes, which are known as the region servers, are configured on the data nodes. Okay, यहाँ सिर्फ यही बता रहा है कि एच बेस की जो एच मास्टर है वो कहाँ होती है, सर्विस कहाँ चलती है, और स्लेव सर्विसेज मतलब रीजन सर्वर्स कहाँ चलते हैं, डेटा नोड्स पे. When to use HBase? As I told you, when instead of having analytic requirement, you have random read, write or update requirements, right? When you have random, मतलब एक random record उठा के read या write करना है, तो we will use it. Okay, or when we want to process multiple records,
मतलब huge amount of data, multiple amount of records. For example, you want to update the salary of all the employees in your company, so you can do that. You are not doing analytics, remember, I am saying you are updating each record and changing the values, so you will use HBase. And when access patterns are well known and simple, yes. Actually क्या होता है, SQL हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसमें रीड ज्यादा होंगे या राइट ज्यादा होंगे. मान लो आपके पास एक टेबल है, एक SQL टेबल है, Oracle टेबल है, आप उसमें रीड भी कर सकते हो, राइट, अपडेट कुछ भी कर सकते हो. आपके जो एक्सेस पैटर्न्स हैं वो इतने डिफाइंड नहीं है. एक्सेस पैटर्न का मतलब होता है कि आप टेबल को किस तरह से एक्सेस करना चाहते हो. आपको पहले से पता है कि इसमें मैं हमेशा ये फिल्टर कंडीशन लगाऊंगा, मैं हमेशा फिल्टर कंडीशन में कहूंगा लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया और अमेरिका. मुझे पता है कि मेरा फिल्टर कंडीशन कंट्री कॉलम पे लगना है. तो जब आपके एक्सेस पैटर्न्स बड़े ही डिफाइंड होते हैं तो आप SQL यूज करते हो. लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस कॉलम पे फिल्टर करना चाहते हो, आज किसी पे कल किसी पे, तो मतलब even in that case also you can use SQL. So SQL में अगर आपको पता है कि आपके एक्सेस पैटर्न्स क्या हैं या आपको नहीं भी पता है क्या है तो आप उसको यूज कर सकते हो. बट नो SQL में आपके एक्सेस पैटर्न्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपना टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं. ओके, when I'll talk about the structure design, I'll tell you what I mean. Okay, now here are the hands-on, so we will do that in a while. So I skipped these things, right? So now we will come back to this. This is the most important thing. Perfect. See this. So now हमें ये पता है कि NoSQL databases क्या है. हम उसमें से एक एग्जाम्पल HBase समझ रहे हैं, विच इज अ कॉलम फैमिली. तो अब हम उसका डेटा कैसे स्टोर होता है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. I told you that, see, there is a table, consider a normal table which is having a column person ID, name, address, birth, gender. अब ये एक नॉर्मल टेबल का डेटा है जिसमें 5 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको. अब इसी टेबल को, पर्सन टेबल को, अगर मुझे HBase की टेबल में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा. तो मेरा जो प्राइमरी की है उसको यहाँ पे हम कहते हैं रो की. रो की क्या है, ये जो दोनों कॉलम है ये कॉलम फैमिली को बिलोंग करते हैं योर पर्सनल डेटा. योर नेम एंड एड्रेस आर योर पर्सनल डेटा, so this is one of the column family. So they can be grouped into one single column family. तो ये एक फाइल में सारा डेटा चला जाएगा. मेरा जो बर्थ डेट है, मेरा जो जेंडर है, वो मेरा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, तो ये एक और कॉलम फैमिली हो गई. देन यहाँ पर मेरा स्कूल का नाम और मेरी स्कूल का पासिंग ईयर है, तो मान लो मेरा एकेडमिक्स हो गया. देन मेरा यहाँ पे कॉलेज का नाम, कॉलेज का पासिंग ईयर है, तो मान लो ये मेरा एकेडमिक्स हायर एजुकेशन टाइप्स एक कॉलम फैमिली हो गई. तो मतलब डेटा सारा वही है, बस उसको हमने कॉलम फैमिलीज में ग्रुप कर दिया. एंड ईच कॉलम फैमिली कैन हैव one or more than one columns. Guys, ये मैपिंग समझ आ रही है? So we will, this is our HBase, this is HBase, and ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है आपका नॉर्मल टेबल. You will understand it more. Let me go back here. So if this is a column family, it contains 2 columns. This is another column family, contains 2 columns. So now if you look here, this is how the HBase data will look like, or HBase table will look like. There will be a row, a primary key or a row key, which is like this is a key. This is like unique. Then
you have a 1 second. Timestamp is a different thing, but what is this column? Okay, perfect. So if you look at that, this is your first row. This is your first row. Now this row will contain, this is one column family, this is another column family. Okay, two column families. This column family's name is contents, and this is anchor. And within one column family, you can have multiple columns, right? So here it's showing you, थोड़ा ये डेटा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे. 1 second. Okay, so if you look here, so what we are talking about is how a edge-based table will look like. It will have a key. So for example, if this is the key, now it will have this as a column family. This column family have 3 columns. Okay, 3 columns, and these are the column values. These are the column values. This is another column family, which is having another column. This is 1, 2, 3, 3 columns, and these are the column values. These are the values. Here there is no value. Okay, here there is no value. So that's what it is. It's like row key, column family. Each column family have certain columns, and each column have certain value. Now, say for example, there is this value, a date. There is some value. If I change this or I update it, so I always will have the latest value definitely, but older value can also be retrieved. So each of these blocks, they are known as cell. Okay, so let me do one thing. Let me do some hands-on for this. It will become more clear for you how this data is organized. Let's do a hands-on. So guys, if you can open your machines, please. Okay, Gomini. Okay, I just saw your question. Access pattern. So access pattern मतलब अगर आपके पास एक टेबल है और आपको उस टेबल का डेटा रीड करना है, तो how you want to read that data? For example, you say that okay, there are 10 columns. My filter column will be say country column. So that is one of the access pattern. So what you will do, you will create an index on country column so that your retrieval is always faster. So you already know that what is my access pattern. In that case, you can make your queries faster by creating indexes on those particular columns. Okay. So how you want to access a table is access pattern, or using which column you want to filter it, that's access pattern. Whether you want to do more reads or more writes or more updates, even that's also access pattern. आप ज्यादा रीड, राइट या अपडेट क्या करना चाहते हो, और अगर रीड करना है तो किस कॉलम के बेसिस पे ज्यादातर फिल्टर करना चाहते हो, तो ये सब चीजें आपके एक्सेस पैटर्न्स का पार्ट होती है. तो
नो सीक्वल डेटाबेसेस में एक्सेस पैटर्न पहले से पता होना बहुत जरूरी है। आप रैंडम सिस्टम नहीं डिजाइन कर सकते उसमें। So guys, please start your machines and start the edge base the way I told you last time. If you guys have the access to LMS, you can log into LMS and follow along with me the queries that I'm going to run. I think this is the link. If you can log in and follow along with me. So there are a lot of NoSQL databases. We are particularly talking about the column family database, and that's too we are talking about the HBase because by default वो हमारे पास available है. HBase is widely used in the industry, but there is tough competition nowadays with other systems. So just open the command line interface, type in the HBase space shell. You will be inside HBase. क्या हुआ? Okay. एक चीज याद रखना, किसी भी NoSQL डेटाबेस पे आप काम करोगे उसकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज होगी। जैसे हाइव में SQL चल जाता है, अगर आपको SQL आता है आप काम कर सकते हो, लेकिन HBase का अपना क्वेरी लैंग्वेज होगा। Neo4j का हमने देखा था साइफर क्वेरी लैंग्वेज है, कैसेंड्रा का अपना है, MongoDB का अपना है, काउचबेस का अपना है। काउचबेस में होता है निकल, N1QL, निकल क्वेरी लैंग्वेज, वो निकल वाला निकल नहीं। तो हर NoSQL डेटाबेस अपना एक वेंडर स्पेसिफिक क्वेरी लैंग्वेज देता है। जैसा कि अभी हम HBase में देखेंगे, HBase के अपने ही कमांड्स हैं बिल्कुल अलग। SQL नहीं फॉलो करता है HBase, हम HBase डज नॉट फॉलो SQL। तो अभी मैं HBase शेल में हूं, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि क्या उसमें कोई टेबल बनी है। सो देयर इज दिस लिस्ट कमांड। नॉर्मली हम क्या करते थे, शो टेबल्स। SQL में हम शो टेबल्स करते थे, यहाँ पर शो टेबल्स इज रिप्लेस्ड बाय लिस्ट। तो व्हाट इट्स सेइंग, 0 रोज, मतलब अभी कोई टेबल नहीं बनी हुई है। तो लेट्स क्रिएट अ टेबल। नाउ हियर आई एम सेइंग ओके, क्रिएट टेबल का नाम, लेट्स से okay, let's say my table name is employee, and now I have some column family. Okay, column family is say their personal data. Okay, comma, their academics,
and I'll simply say enter. So guys, whenever you are working with the HBase, you have to create a table. So that is like table, and these are two column families. So every table needs to have column family. You don't specify columns here. Academics में मेरा स्कूल नेम, कॉलेज नेम क्या है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, because NoSQL systems are dynamic schema. मतलब आपको पहले से कॉलम के नाम नहीं भी पता है तो चलेंगे, कॉलम के नाम हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, बस हमें कॉलम फैमिली का नाम पता होना चाहिए. Let me do list now. See, I have this employee table created. So guys, I am waiting for all of you to reach up till this place. So Nistha, HBase does not use SQL, okay, because it's not a relational database. HBase or even any other NoSQL database have its own query language. So Gulzar, HBase does not follow SQL or HQL. It has its own query language. Hive uses SQL because it's a batch processing system. Okay. So Nitika, other two are not the columns, they are the column family. Means personal data can have age, gender, address, height, weight, anything. So the beauty of NoSQL is कि अगर आपको पहले से कॉलम के नाम नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको कॉलम फैमिली पता होनी चाहिए, मतलब फैमिली ऑफ कॉलम्स. ओके नितिका, सो वन कॉलम फैमिली कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स. सो गुलजार, एजबेस की जो क्वेरी लैंग्वेज है उसका ऐसा कोई नाम नहीं है, उसको बस हम CLI कमांड्स कहते हैं, एजबेस CLI कमांड्स, ठीक है. लेकिन Neo4j में हम उसको साइफर कहते हैं, Neo4j की लैंग्वेज है साइफर. तो सबने ऐसा कोई फैंसी नाम नहीं दिया है. Yeah, Gulzar. So if you look, Google it like HBase CLI commands, you will get these commands. But real world में हम NoSQL पे जब भी काम करते हैं, we use Java. 90% of the time, we create Java programs to read, write, or update the NoSQL data. Okay. Yeah, people, don't worry about it. See, there are two things to learn anything. One is its core concepts and the basic level of hands-on, and second is, are you going to be a coder of that thing only? So if you guys are going to just work on HBase, for example, then it's good to learn Java, otherwise no. So you guys are not going to work on HBase as a core skill. But what will happen is, when you are working as an analyst expert or a database analyst or a data scientist, कोई तुमसे बोलता है यार ये HBase की एक टेबल बनी हुई है, उसमें देखना डेटा है कि नहीं, तो आप लोगों को क्या करना होता है, जो मैं कमांड्स यहाँ बता रहा हूँ, how to log into HBase, how to see the data. No one is going to ask you to write a Java program. Be very specific on that. So you don't need to really learn that, because that's for big data developers. You guys are not big data developers. And another good thing is, using Python, I can work with HBase.
So there is a package we can pip install that package is known as happy base. So you can do pip install this package happy base. Pip is not found ना. I have to search first of all कि pip command कहाँ पे पड़ी है. तो using Python also I can work with HBase. This is the package. अब हमें पता ही है ना अलग अलग पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं. तो हैप्पी बेस ये आपको इंस्टॉल करना है गुलजार. पिप इंस्टॉल हैप्पी बेस, दैट्स इट. आप अपने लोकल मशीन पे भी कर सकते हो जो पाइथन है आपके पास. अब यहाँ पर पिप कमांड नहीं चल रही, इसका मतलब ये है मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा आखिर इस सिस्टम में पिप कमांड पड़ी कहाँ है. बहुत जगह पड़ी है. नहीं नहीं, अभी तो आपको कुछ नहीं करना है. वर्चुअल मशीन में कुछ मत करो. मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम जावा से भी HBase पे काम कर सकते हैं, हम पाइथन से भी कर सकते हैं. लेकिन पाइथन के लिए आपको ये हैप्पी बेस का पैकेज चाहिए होगा. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट राइट नाउ. यू डोंट नीड टू डू दैट. क्योंकि हैप्पी बेस पैकेज अगर कोई इंस्टॉल करना चाहता है तो अपनी लोकल मशीन पे भी कर सकता है. जस्ट टू सी कि हैप्पी बेस नाम का भी कोई पैकेज होता है. ओके निष्ठा, कि हाँ हैप्पी बेस नाम का कोई पैकेज है, हम उसे यूज कर सकते हैं. इवन अगर आपको हाई पाइथन के साथ हाइव पे काम करना है तो देयर इज अ पैकेज नोन एज पाई हाइव. पिप इंस्टॉल पाई हाइव. So using Python, you can read and write data in Hive also. Okay, so this is what you have to do. Pip install PyHive. तो बहुत सारी चीजें हैं करने को. I'm just telling you कि Java is not something that you need to really worry about. Okay. So guys, are you all up till this place inside HBase able to create a table? Perfect. तो जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में हम कभी भी कॉलम का नाम नहीं बताते, सिर्फ कॉलम फैमिली बताते हैं. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डायनेमिक स्कीमा. रिमेंबर, अगर आप कभी एक रिलेशनल टेबल बनाते हो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ इसके अंदर एक आईडी का कॉलम होगा, एक एज, एक सैलरी, राइट. आप बाद में कोई कॉलम ऐड या डिलीट ऐड नहीं कर सकते. मतलब कर सकते हो लेकिन इट्स अ टीडियस एफर्ट. अगर आप कोई नया कॉलम फ्यूचर में ऐड करते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो एक रिलेशनल टेबल में भी, बट इट्स नॉट अ सिंपल वर्क. सम डेटाबेसेस विल नॉट अलाउ यू टू डू इट. वो कहेंगे कि पहले से डेटा जो है उसको डिलीट करो पहले, उसके बाद ही मैं नया कॉलम ऐड करने दूंगा. कुछ सिस्टम्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनमें नल 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 ऐड कर देते हैं अगर आप कोई भी नया कॉलम ऐड करोगे, और नल भी मेमोरी कंज्यूम करता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम नो सीक्वल से सॉल्व कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप कितने भी नए कॉलम ऐड करो, एक तो इजीली वो आपको करने देगा चाहे आपके पास ऑलरेडी डेटा है या नहीं है, और जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनमें वो कुछ भी स्टोर नहीं करेगा. इट्स लाइक नथिंग, नॉट इवन ब्लैंक और नल, नथिंग. ओके, perfect Nishta, that's good. So we have created a table, we have listed the table. Now let's describe the table. यहाँ पर ये सिंगल कोट में ही देना पड़ता है सब कुछ. HBase में सब कुछ सिंगल कोट में जाता है. Now guys see, this is very important. You
you said describe, right? Describe a table that you have created. So this table, when you created, you gave 2 column families. So here you will see column family level description. But before that, you also see, okay, table is enabled. So in HBase, whenever you create a table is enabled by default. अब मान लो कल आप कहते हो राहुल मुझे ये टेबल ड्रॉप करनी है, तो आप टेबल को डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको पहले उसे डिसेबल करना पड़ता है और उसके बाद ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है? You have to first disable it and then drop it. There is a reason behind it. Okay. You can identify that, Google it. There is a reason behind it which is linked with the region servers and all. Okay. So whenever you create any HBase table, it's enabled by default. You can disable it. Even sometimes we disable it but don't drop it. Disable का मतलब ये होता है कि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए. ड्रॉप करने का मतलब है कि उसका डेटा भी उड़ जाए. So sometimes you only disable that, but you don't drop it. Now, in that table, there are column families. So if you look at name academics and name personal data, so these were 2 column families. Okay. I told you that this table will be storing data in 2 files. One for this column family, another for this column family. Understand this, that this is your table, this is your row key, and these 2 are column family, right? These 2 are column families, right guys? So one column family will have one file, another column family will have another file. Now let's say this is one file. This file will further be split into smaller files known as H files. I told you, right? H file. So there will be H files for this column family, there will be H file for this column family. Okay. That's why you will see the descriptions are different for a different column family. Matlab, for this column family, you see this versions 1. I think someone was asking, na, Karan or Vipul, version thing or Gulzar. By default, for every cell, there is only one version which is maintained. Matlab, agar मान लो age is one of the column, so you can have only current value and the previous value. Version 1 means current and previous, 2 values. But let me change it. If I update it, I can change it to 7. Then it will store last 7 values for that column. Okay. Then there is one thing which is TTL. TTL forever. TTL का मतलब होता है guys time to live. NoSQL में ये बहुत ही important concept होता है. इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने एक रो क्रिएट की, लेकिन ये रो टेम्पररी है. आप चाहते हो कि 4 दिन के बाद ये रो डिलीट हो जाए, तो एक तरह से आपने उसके ऊपर एक लाइफ अटैच कर दी कि आपके टेबल में ये जो रो है ये 4 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी टेबल में से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट फॉरएवर मतलब वो जिंदगी भर के लिए. अगर डिलीट करना है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा. समझ रहे हो गाइस? इज इट क्लियर? कॉलम मतलब एच टेबल क्या होता है, कॉलम फैमिलीज क्या होती हैं, कॉलम फैमिलीज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो at every column family level we have versions, we have TTLs and और भी बहुत सारी properties है. We'll not go into that right now, but these are the 2 most important. Gulzar, first of all, do you know what is deleted cell? Any idea? Matlab, what do you think a deleted cell is? No, that's a good question, Gulzar, which you are asking. But
you are asking a bigger question. I am breaking it into smaller question. Okay. So you are saying one data row delete. Okay. Okay. The cell which we deleted from the table record. Okay. So Gulzar is near the right answer actually. Because I told you, right, when we say a row first of all is divided into three parts. One is row key, this is one column family, and say this is another column family. Now within this column family I can have multiple column, for example age, gender, right, and say his age, gender and marital status. So within this column family I have three columns, and let's say this data is for a person Sam. For Sam, if this is the row, this particular value is a cell. So Gulzar, you are right. So if I am deleting this particular value, so for Sam, I am saying let's delete the age, whatever the value was there, and put it as like blank or null. We are not doing anything, we are deleting it. So now that deleted value, what happens is by default it's stored, it is also kept in the system so that you can retrieve it at the later stage. Keep deleted cell false, you will not be able to retrieve it later. But if you make it true, you can retrieve the deleted values also. So there is a difference, right? One is you are changing the value by creating multiple versions. One is you are deleting the cell and you want to retrieve it in future. So you have to make this as true. Okay. Gulzar, getting it? So if you are saying, okay, TTL is forever, no one is going to delete it. But if you are, then you have to do manual deletion, okay? But now if you are doing manual deletion, the point is, क्या मुझे वो फ्यूचर में रिट्रीव करने की जरूरत है? अगर फॉल्स है तो आप रिट्रीव कर ही नहीं सकते क्योंकि यू डिडंट कैप्ट द डिलीटेड सेल. बट अगर इसको ट्रू कर देते तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हो. गाइस, गेटिंग इट? ओके. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट्स हैं. वर्जनिंग, which is like when you are updating the values. Keep deleted cells is like when you are deleting the value. You are not updating it, you are deleting it. सिस्टम में से ही हटा दिया वो वैल्यू. मतलब मुझे पता ही नहीं है उस बंदे की एज क्या है, मैंने उसकी एज का कॉलम ही उठा दिया उस बंदे का. बाकी लोगों के लिए है वो, उसके लिए उड़ा दिया मैंने. तो आप ये सारी वैल्यूज गाइस चेंज कर सकते हो कॉलम फैमिली लेवल पे. तो एक कॉलम फैमिली में जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे. ओके. Now let's go to next level. Let's try to Sir, insert. just a minute. Yes. एक बार ये फॉल्स के साथ जो ब्लॉक साइज और ये ब्लॉक एक. हाँ बताओ. हाँ हाँ बोलो बोलो. ये पूछ रहा हूँ कि ब्लॉक साइज और ये ब्लॉक एक. हाँ हाँ हाँ, ब्लॉक कैशे राइट. हाँ, मैं गुलजार, आई विल कम टू दोस थिंग्स एक्चुअली. मतलब we will go one by one. Currently we need to understand versions, TTLs, and you touched upon this, right? But then there is this Bloom filter also, which is very important. This replication scope is also very important. Replication, as we say, right, 0. Matlab here there won't be any replication. मतलब एक ही कॉपी रहेगी, दो और कॉपियां नहीं बनेंगी. तो हर एक प्रॉपर्टी का अपना अपना मतलब है. जैसे रेप्लिकेशन स्कोप हमें पता है, कंप्रेशन क्या करनी है, मिनिमम वर्जन्स इज अनदर थिंग टू कीप लाइक 0.
Okay, so we will talk about this block cache and all. Block cache, block size, and in memory. These are all related to the architecture. So architecture में हमने H फाइल को अभी ओपन नहीं किया है और H फाइल के कॉन्सेप्ट को, राइट? तो जब हम H फाइल के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इस चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि ये सब क्या होते हैं। रीजन सर्वर और H फाइल्स को जब हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे तब आप इसको रिलेट कर पाओगे ब्लॉक कैश और ब्लॉक साइज को। सो आई विल टॉक अबाउट दैट। ओके, तो currently what we have, sir, I wanted to confirm what some of the syntax now. Okay, Gulzar. So what we should understand first of all is how to see the table, how to create a table, and टेबल बनाते समय क्या चीजें जरूरी हैं। कॉलम का नाम हमें कभी जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम फैमिली हमें चाहिए। Okay, now okay, so whenever you want to insert the data, so the command we have is a put command. Put now what I want to do is, let's, okay, so now you want to put something like put inside this table. Okay, now what you want to do is you want to put inside this table some value. So you want to you need to give the row key. So let's say 1 is the row key. Then you have to now specify the column. So I have my personal data, my age, like for example age, and let's say 30. Okay, so थोड़ा weird है ये देखने में। syntax क्या कह रहा है, put in this table these values. What are the values? This is the row key. Okay, अब देखो एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब टेबल बना रहे थे आपने रो की कभी डिफाइन ही नहीं की, लेकिन जब भी हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं हमें रो की बतानी मैंडेटरी है कि आखिर ये जो मैं डेटा डाल रहा हूं ये किसके लिए डाल रहा हूं। तो दिस इज द रो की। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द एम्प्लॉय आईडी 1 प्राइमरी की, द रो आईडी इज द प्राइमरी की। नाउ हियर आई एम सेइंग कि फॉर दिस कॉलम फैमिली दिस इज द कॉलम and this is the value. So age 30 and age column belongs to this column family. So this is done. Now the problem here is you have to keep doing this. For example, I say okay, gender, is male. So what you have to do guys is if this is your table and this is your column family, अब इस कॉलम फैमिली में आपको 10 कॉलम की वैल्यू अगर डालनी है तो इस तरह से एक एक करके डालनी पड़ेगी। कॉलम फैमिली, कॉलम, कॉलम का नाम और ये उसकी वैल्यू है। ओके, और रो की लेकिन वही रहेगी, एम्प्लॉय आईडी 1। if you can follow along, please do this. I have pinged you the command. तो नॉर्मली आप कभी भी ये नहीं करोगे, रियल वर्ल्ड में कभी भी आप बैठ के ऐसे डेटा इंसर्ट नहीं करोगे। You will just do analytics. We will use those queries, which is select queries, how to read the data. So guys, please let me know once you are able to create the table, insert some data inside it.
परफेक्ट। तो देखो किसी भी NoSQL का we have own syntax. In the HBase we have inserted the data like using put command. This is the insert query. Similarly, we can update the data. Then there is the update query also. But the most important thing जो आपको करना होगा वो होगा select query. So how to read the data from a table? You will never insert the data, okay? So you will read. So there is a scan command, okay? अनिष्ठा वो किसी किसी वर्चुअल मशीन में नहीं अलाउड होता है. नॉर्मली मैंने कुछ अलग से नहीं किया, वो कुछ सेटिंग चेंजेस करके हो जाता है अगर नहीं चल रहा है तो. कई बार उसके लिए कुछ सेटिंग चेंजेस करने पड़ते हैं. Okay, so guys, scan. So there are two commands to read the data, get and scan. I will tell you the difference. First we are doing scan. Okay, let's see, this is the output. Okay, scan command is actually it reads the entire table. Scan command पूरा table read करके सारा data display करता है. Okay, it's like you are selecting everything from the table. Now let's try to understand the output. This is the row 1. This is the column. So column is like, this is the column family and this is the column name. Like this is the column family, this is the column name. So ultimately, if you look at row 1, this means this is one same row. This is the same row, but the data is displayed at the column level. Like another column, its value is like 30 and this was male. But now the good thing is this timestamp. So guys, every record that you add, update or delete, there is a timestamp associated to it. So for example, अगर मैं कल को इस वैल्यू को 30 को 31 कर दूं, तो there will be a new timestamp. तो अगर ओल्डर वर्जन की वैल्यू मुझे ढूंढनी है तो मैं पुराने टाइमस्टैम्प से ढूंढ सकता हूं. I'll tell you that later, but yeah, though this timestamp is the epoch time. Remember we were talking about this epoch time sometimes. So this is the epoch time. Guys, ये समझ आया है आउटपुट कैसा क्या दिखा रहा है? So you have to just say select star from a table. So that's what scan table, and it will give you the output. But यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक रो में एक ही रो का डेटा है. मतलब नॉर्मली आपको RDBMS में एक रो एक साथ दिखती है पूरी. यहाँ पर दो दो पार्ट्स में दिख रही है. अगर तीसरा कॉलम होता तो वो भी नीचे दिखता, चौथा पांचवा ऐसा नीचे दिखता. Okay, so this is about the scan query, which is good when you have to see the entire data. But consider you have millions of records and you want to see the data for say Rahul. Random read and random writes, correct? HBase का फायदा ये है ना, you can randomly read or write anything. So then which is the command? So the best command to use is get command. Okay, so get command is actually the most important command. So while using the get command, what we need to do is we simply need to know two things: the table name and the row key. मतलब स्कैन कमांड को सिर्फ टेबल का नाम चाहिए, ठीक है, लेकिन गेट कमांड को टेबल का नाम और वो रैंडम रिकॉर्ड जो आपको रीड करना है, मतलब वो रो की, तो ये इमीडिएटली उसको ढूंढ लेगा. मान लो ये आपका एक टेबल है जिसमें मिलियंस ऑफ रोज हैं. स्कैन कमांड में प्रॉब्लम क्या है? इट विल रीड द एंटायर डेटा वेरी स्लो. गेट कमांड is very random. It will not go like okay शुरू से end तक, नहीं. It is like a pointer, randomly points to that value, fetches it and give it to you within seconds, because you have given the key. So it always needs the key which you want to display. So that's why it's very very fast. Hive में ये possible नहीं है. Okay, Hive is like slow. It's like scan. Hive is like a scan, but this is what makes HBase very fast.
Next I'll come to that, but just see the difference in the output. Get का output भी वैसा ही है, बस इस पार्ट की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रो की पता है, तो लेफ्ट वाला पार्ट उसने दिखाया ही नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाया, उसमें भी ये वाला हिस्सा अलग कर दिया इधर, और ये वाला हिस्सा अलग कर दिया इधर. ओके, so there is a scan, there is get. Okay guys, now अब सिर्फ इतना सा तो होगा नहीं स्कैन गेट, डेफिनेटली स्कैन और गेट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, you can play along with that. For example, you want to put some filter conditions. Okay, scan the entire table but give me the data only where age is greater than 30 or where gender is male or female. So you can put some filter conditions, we will talk about that. हम वो get में भी दे सकते हैं, scan में भी दे सकते हैं. Or you want to say, okay, show me only the first few records or the last few records. There are some attributes. Okay, Nishtha. So this scan query itself is very elaborate. We will talk about it. Or even in the absence of me, like you can also explore it. Okay. मतलब मेरा आजकल थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रही है क्लासेस, इसलिए आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस इतना कि आप लोग मेरे एब्सेंस में कर सको चीजें हैंड्स ऑन डिटेल्ड लेवल पे. अगर मैं उतना नहीं अभी जा पाऊंगा अगर, तो एटलीस्ट मेजर चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ. तो स्कैन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि सिलेक्ट कंडीशन, सिलेक्ट क्वेरी में फिल्टर कंडीशंस होती हैं, या लिमिट होता है कि टॉप फ्यू रिकॉर्ड्स, लास्ट फ्यू रिकॉर्ड्स, वो हम स्कैन में सब कर सकते हैं. एंड इफ ओनली टू व्यू फ्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम द मिडल. No Gulzar, unfortunately that's not there. You have to use the combination of scan queries for achieving that. Okay, मतलब you can do that using certain combinations. I think there is something known as lower limit and upper limit. I'll check that. I think that's available, Gulzar, what you are asking in scan, the lower limit and the upper limit, the lower row key and the upper row key, that's there. Okay, but yeah, Gulzar, that's a good point. Guys, anyone, any question on scan and get? Guys, any question? Okay, wait. So let's see this, Nishtha, the point that you were asking, right? Copy, paste. तो अभी हमें स्कैन और गेट को ही बहुत टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. So this is the curly braces where we actually put the conditions. So what happens is, now you are saying, okay, let's scan the table, but while scanning, only show me top 5 records. Okay, so this curly braces is to provide the additional attributes. Gulzar, even the lower row key and the upper row key are to be provided inside this limit only. So any attribute additional, whether it's a filter condition or a range of row keys, needs to be provided in this clause, the curly braces. Okay. So Nishtha, you can try it out, but remember to put the single quotes around all the characters that you put in here. So Nishtha, if you see limit 5, it gave me this thing. अब मेरे पास डेटा ही इतना है. Let me put some data. Yes, Gulzar, get command है ना?
गेट कमांड में आपको बस आईडी पता हो, आप पूरा डेटा उसका डिस्प्ले कर सकते हो ना। यहाँ पर निष्ठा मैंने 1 कर दिया, देखो आई एम सेइंग स्कैन दिस टेबल बट लिमिट इज ओनली 1, so it gave me only 1, the row 1. But if I would have done only scan, so this was the row, first row, this was the second row. Nistha, I haven't tried that. You can try that, limit 0. I don't think it will give anything, but let me try. I mean, it's not understood. Huh? No. It's not understood to be a valid value, so it gave everything. So 0 is not a valid value, so it gave you everything. Okay. So there are at least 20 different attributes like limit which can be passed here. Okay. And all this thing can be done through Java also, same things. Okay. So now there is something very important, which is there are two spatial tables. Let's see. देखो एज बेस में हमेशा दो स्पेशल टेबल्स होती हैं जिनका नाम होता है एक तो होती है मेटा. सो लेट्स सी डिस्क्राइब मेटा. इसका नाम बदल गया है. One second, guys. There are two very important tables in HBase known as system tables. Perfect. So there are two very important tables in HBase which are system tables. अब आप लोगों को इतना तो पता है कि सिस्टम टेबल्स का मतलब वो टेबल जिनमें मेटा डेटा होता है, डेटा अबाउट डेटा, राइट. तो अगर मैं स्कैन कर रहा हूँ मेटा टेबल, so there is a meta table which contains data about data. Okay. So that means जितनी भी टेबल्स आपने HBase में बनाई है उनकी सारी जानकारी इस मेटा टेबल में होगी. और ये HBase कॉलम क्या है? ये स्कीमा है जिसके अंदर ये टेबल एग्जिस्ट करती है. ठीक है. अब यहाँ आखिर इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने टेबल बनाई वो यहाँ दिख रही है कि नहीं. अगर आप देखें तो ये रही. तो यहाँ पर भी रो की है, बट ये रो की थोड़ी कॉम्प्लेक्स रो की है. फिर उसमें कॉलम है जिसमें देख रहे हो रीजन इन्फो एज आई वाज टेलिंग यू, राइट. हर टेबल रीजन सर्वर में स्टोर होती है
और रीजन सर्वर के अंदर भी रीजन्स होते हैं, देयर आर मल्टीपल रीजन्स। तो मेरी टेबल किस रीजन में स्टोर्ड है वो मुझे यहां से पता लगता है, ये एनकोडेड नेम है उस रीजन का। कोई भी टेबल स्मॉलर एच फाइल्स में स्टोर होती है और एच फाइल्स आपके रीजन्स में स्टोर होती है। तो ये उस रीजन का नाम है, तो ये मेरी टेबल है। ओके, सो इफ यू लुक एट वन सेकेंड, हाँ। So guys, if you look at this is my table, employee table। तो वो किस रीजन में स्टोर्ड है, क्योंकि छोटी सी ही टेबल मैंने बनाई है जिसमें 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, तो वो एक ही एच फाइल में सारा डेटा पड़ा है। और that H file is stored in this particular region. This is the name of that particular H file. This is the start key and the end key. Like Gulzar, you are asking, right? Start key, end key अगर मैं दे दूं तो मुझे सारा बीच का डेटा मिल जाता है। तो रो की में स्टार्ट कीज और एंड की भी मैं पास कर सकता हूं। Similarly, there are other attributes which is like this one, which is a sequence during open. Then this is the server. So server as in the region server. तो मेरा रीजन सर्वर, उस सर्वर पे कौन सा रीजन है जिसमें मेरी ये फाइल पड़ी हुई है। सिमिलरली ये मेरी दूसरी एक टेबल है, एच बेस नेम स्पेस करके, वो किस रीजन सर्वर में है और उसमें कौन से रीजन में है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मुझे मिल जाती है। अब ये चीजें आपको कैसे समझ आएंगी, लेट मी शो यू द आर्किटेक्चर, बट बिफोर दैट लेट मी पिंग यू दिस। मैंने आप लोगों को इसका कमांड का जो भी आउटपुट है वो पिंग कर दिया है। एंड आई एम क्लोजिंग दिस सेशन, सॉरी। So guys, so far what we have looked is edge-based architecture में there is this zookeeper which is having an ensemble of masters. Then there is this region servers, right? So let's go back to this. Yeah, perfect. So if you look at this thing, right? This is one data node, this is another data node. तो अभी जो मैंने आप लोगों को पिंग किया है, अगर आप उसमें देखें कॉलम जिसका नाम है सर्वर, सो देयर इज एन एंट्री फॉर सर्वर, तो वो जो सर्वर है वो आपको रीजन सर्वर का नाम बता रही है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू चेक दैट। क्या मुझे उसकी वैल्यू पिंग करेगा कोई? एम्प्लॉय टेबल किस रीजन सर्वर के अंदर है उसकी वैल्यू पिंग करेगा कोई मुझे? लेट मी चेक कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं उसे। ओके, या गोमिनी यू आर करेक्ट।
Guys, anyone else? Guys, what I'm saying is, whenever in HBase you create a table, that table is split into H files, smaller H files. Those H files are stored in the data nodes. Data nodes are known as region servers. Okay, so region server की वैल्यू आपको दिख रही है, मैंने जो पिंक किया है उसमें there is a column I've pinned you. Can you see this column? इसकी वैल्यू क्या है? जो मैंने आपको डेटा पिंग किया है उसको नोटपैड में ले लो, तभी वो समझ आएगा, ऐसे इसमें सेल में समझ नहीं आएगा. Can you take that data like this? So I am saying that this is your region server, guys. If you look at my screen, this is the see, this is metadata, right? This is metadata. So metadata for this table is having this column server, and this server column is having this value, na? Quick start Cloudera 60020. So this is the port, and this is the machine. So this is telling you the server. What is this? This is this region server, which is nothing but your data node. But now within one region server, there can be multiple regions. There can be multiple regions. So how will I know which region this belong to? So this is the region info. So which is the region? So this is the value, right? So this encoded value, this encoded value is the that encoded value is the name of the region server. This value, what you see here is this region. This region has a name because एक region server में multiple regions हो सकते हैं. Okay. But what normally happens, guys, is say your file is your HBase table is so big. This is your HBase table, but it was quite huge, due to which what happened is it split it into two H files. Row key 1 till 100 is in one, and 101 till 200 is in another H file. So first H file is stored in one region, another H file is stored in another region, it may be in another region. So that's why all the H files, they have a start key and an end key, कि भाई ये वाली जो H फाइल है इसमें कहां से कहां तक का डेटा है. फिर दूसरी H फाइल का अलग इंफॉर्मेशन होगा उसकी स्टार्ट की एंड की को लेके. लेकिन कई बार मल्टीपल H फाइल्स एक ही रीजन में भी हो सकती हैं, एक ही रीजन में भी हो सकती हैं H फाइल. ओके. Then there is this concept of store file and memory store. So गुलजार, जो आप ब्लॉक कैशे, ब्लॉक मेमोरी, वो जो पूछ रहे हो वो सारा मेमोरी से रिलेटेड है, मेम स्टोर से. आई टेल यू. तो उसके लिए हमें पहले मेम स्टोर और स्टोर फाइल समझनी होंगी, ये दो चीजें समझनी होंगी कि आखिर ये क्या है. तो guys, understand that within a region server there can be multiple regions. Within one region there can be multiple H files. Okay, and H file is the actual data. Every H file has a start key and an end key, row key, to tell you the start key and the end key. Okay, so this is very important for someone who want to see कि मेरा data एक्चुअली में किस तरह से पीछे स्टोर्ड हुआ है HBase में. तो दिस मेटा टेबल, you have to scan the meta table, HBase colon meta. Similarly, there used to be one more table which was root,
बट अभी वो डेप्रिकेट हो गई है, रिमूव हो गई है। वो भी सिमिलर इंफॉर्मेशन देती थी, बट अभी मेटा टेबल ही है। ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर ड्यूरिंग ओपन, ये मुझे भी नहीं पता है, देखना पड़ेगा इसका क्या पर्पस है, बट मेन ये है आपका रीजन सर्वर एंड रीजन नेम। तो 3 कॉलम्स दिखा रहा है, ठीक है। So in the next class, we will further deep dive this architecture, where we will talk about the block cache, block memory, memory store and store file. Okay, that's but if you look at, we were talking about region server, which is nothing but the slave machines, and then region, a subset of tables rows, like horizontal range partitioning. What that means is, if this is a table, this table is split into first region, second region, like one region have H file, this will have H file, this will have H files. So we have to understand that in detail, the concept of regions and the H files. Okay, so I'll explain you how a H-based table is linked to the regions and the H files. So guys, please try this hands on. ये वही सब है जो अभी हमने देखा, जो डेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, टाइम स्टैम्प्स वगैरह, हाउ द कॉलम फैमिलीज आर बीइंग डिस्प्लेड along with their values. तो ये डेटा एक्चुअल में वैसा नहीं था, हमने करेक्ट डेटा देखा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। करेक्ट डेटा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जो हमने वहां पर देखा, कॉलम प्लस सेल। ओके गाइज, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड द क्लास? एनी क्वेश्चंस? गुलजार, मेमोरी स्टोर तो अलग चीज है, मेमोरी स्टोर की बात हम करेंगे बाद में। ओके गाइज, सो व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस H-base and read more about its architecture, how the table is split into regions and H files, and we will talk about that tomorrow. And if time permits, I will try to run a Python program to read data from H-base. Okay, thanks a lot, guys. Please read about H-base, because at least एक NoSQL database is mandatory for any data scientist in today's world. It is very, very mandatory to know at least one NoSQL database. Gulzar, okay, what you are asking, point number, page 6, last point, H-base, page 6. You are asking about this thing, Gulzar? सर जो डाटा साइज का ये जो दिस नेगेशन आईपीबी जो लिखा हुआ है, हाँ सर ये कि ये आईपीबी होगा या 1 पीबी होगा? नहीं, वो 1 पेटाबाइट है, 1 पेटाबाइट। हाँ, और सर उसके साथ जो सिंबल है वो क्या है? अप्रोक्सीमेट सिंबल, अप्रोक्सीमेट 1, ओके सर, लगभग 1 पेटाबाइट। मतलब ठीक है इसका सर। ये है कि H-base इज फॉर बिग डेटा, बट अप टिल 1 पेटाबाइट, लेकिन इफ यू हैव huge data, then better stick with HDFS for map reduce. Okay, so if you have huge data, you can do that. Okay, so and Gomini, this is like the access patterns, like what is your write patterns, what are your read patterns, whether it's a sequential pattern or a random pattern, right? Whether you want to read sequentially or randomly, so all those things we have to decide. Oh, okay guys, thanks a lot. Read this content, it's good. Okay guys, thank you, bye, take care.